So, Salis, thanks for joining, Salis. And I have sent that in group also. If somebody is interested, they can also join. Okay. So, meanwhile, what I want, Salis, you create a component, okay, and show me Yes, sir. how that component will be loaded. Can you please do that? Share your screen. First thing I'll tell you, like, create a component, okay, and then try to load that component. Okay, because we all know that by default app module and app component will be loaded. What if I want to load a different component? How you will do this? Already I have explained. I just wanted whether you can apply your brain and you can achieve it. If not, I'll let you know. So we will do this quickly. Okay, so please Okay, please sir. share your please share your screen and start it. ऑन करिए अभी आप है Share your screen. If there is any issue, I'll help you also. So that okay, I have to. Okay, multiple participant. Okay, please, you can share. Your screen is not visual, Silas. ओके सर एक मिनट हो गया Hello, sir. Hey, Aman. Thanks for joining. Sorry, I'm a little late, but I mean, if you want, you can quit. Recording will be there. You can see the recording. No, sir, I'll be here. Okay. So create the component. You know how to create a component, Silas? Ng, very good. Ng generate component. Otherwise, there is shortcut also, but you write the full. There is ng, then you can space the ng and then c also will work. But you do everything. Ng generate component. Okay, and then give the component name. Student hyphen details. Just give the details. Already info you have, so give the student hyphen details. Okay, enter it. Okay. सर नया कंपोनेंट बनाना है क्या? No, yes. What I'm trying to explain is ओ सर इसमें कौन ओ सर जनरेट का स्पेलिंग गलत है ओ सर GNERT. Just keep E. G only. GNERT component. Yes, component. The shortcut is you can write also ng, g, and c, but try to give the full name, because we are learning. So try to learn entire thing. But actually, generally we write ng hyphen g hyphen sorry ng space g space c and then component. Yes, sir, for just saving the time, but that will use the professional coders. ng generate component student details. Okay. हो गया Now, सर so everybody try to achieve this. And now what I want is now run this application. Correct? स्टूडेंट डिटेल सर ये है Perfect. So all those component detail, okay. Otherwise, you can revise with the previous videos. Okay. What is the part of a component? What is template URL, selector, everything we have already discussed. Now, what I want is whenever application runs, run this application. Can you please run this application? Build, bundle, and deploy. Okay. npm start will do. Why npm start? Because in our script file already we have mapped this with ng open. Correct. So this is our ng serve open, and it will open in your browser. Default port is 4200. Okay. तो But सर सभी को स्टूडेंट डिटेल नाम का ही बनाना है या फिर जो सबका अलग अलग वो था मॉड्यूल था उसके हिसाब से बनाना है, लाइक माय सब्जेक्ट
and और अभी सबका अलग अभी अलग। no, right वो now तो सब you बना लिए थे ना। अब अभी क्या है, सब लोग स्टूडेंट डिटेल्स बनाए just for Okay, sir. because I want to know or try everybody that how you will load a new components. Okay, we'll see. We'll see. Just wait. Then I'll let you know what I'm trying to achieve. See here. See. My name is Sailesh Verma. So this is the older components. Correct. What I want, the newer component should load here. Yes, Already I will how we will do it. Okay. So take your time. Okay. Take your time. Spend 4-5 minutes. It's 23:05. I'll give you 5 minutes. It's a live assignment, and you try to load these new components. Okay, do not ask me any okay, sir. question, because I want everybody should spend time and should do it. We'll take a pause of 5 minutes. Whoever is looking into the recorded video, he should also try to achieve it. And if not, then later on I'll explain. Okay, how to do that. Already I have explained. I think that a kind of refresh is required, so I have started this. Please do that. How to load a fresh component, newly added component. So you keep trying. Let your machine be shared. You keep trying. Okay. Okay, sir. I don't know who will say join. Oh, this is Generated, sir. Try to load it. With some content or without content, sir? No, first try to load without content, and then you can write some content also. I mean, it's your wish. Okay, sir. The idea is Okay, whether sir. you are able to or not. सर आ रहा है स्टूडेंट डिटेल वर्क्स। No, I want only this student detail works. Only this. ओके Very good. I want only this. So what you have done? Show me what you have done. Show me what you have done, Salis. you can say Perfect. I mean, wherever you will use this, that will get loaded, correct? Since Yes, sir. app component, very good. Since app component is our default stuff, so wherever you will call it, will it called? Okay, so it's clear to everybody. Now there is a twist. Suppose what I don't want to call the app component. I want to I directly want to call app student details. So here app dot component is your parent, and app hyphen student hyphen details is a child. Correct. So parent child Yes, sir. relationship talked about. Correct. So this you can do. Yes, sir. But I want that I don't want parent child relationship. I want that app student details should freshly load. Okay.
So how I will achieve this? Okay. This is the second thing. This is the little twist. Huh? So if you are able Yes. to do that also, it means you have understood it. Because so many times I have explained, enough time has been given, okay, about the folder structure, how things are being loaded. So if you are able to recall that, and then you should be able to do it. सर ऐप डॉट स्टूडेंट डिटेल एप्स को डायरेक्ट अगर हम लोग वहाँ ऐप डॉट HTML डॉट वहाँ पे कॉल करें तो डायरेक्ट फ्रेश आएगा. So don't ask me, try it. A machine is in front of you already. I have told what I want. You Okay. try it. Okay. Sir, I got some error, sir. I'll look into that error first. Whoever is first understand the concept, like how to call a new component to the existing one. So the one way is already app component gets loaded. Okay, there you can use this as a child component. Now what I'm asking is, don't make this as a child component. Try to use this as a perfect Sales. Perfect Sales. I think he is understanding and is looking into video more. Perfect. So you will change it also, but there would be a challenge. You do it. This is the way, but there would again will be a problem. Save it. You will not able to see it. Save it, and you are just one step ahead. Save this also. Correct, na? Perfect. Go to browser and see. आ गया सर. No, it's not coming. Oh sir, yes. Yes, now so there is a little one more thing also which you have to understand. Already those concept has been explained. So this will be a kind of refresher. So that's what I've given this live assignment, whether you are able to call a component or not. Now try to fix this also. If not, then I'll do this. So I'll give you 4-5 minutes. Think this, and then we'll disconnect this video. This is just an assignment, and then we'll start our actual work. Property binding, event binding, and interpolation, and two-way binding. Okay, so those things I want to explain today, but I thought whether you are able to recall these older concept or not. So that's what this video I thought to discuss. You can do it. It's not a big deal, Saris. Just think. Aman, you also okay. You try to fix your issue. Otherwise, share your screen, and then I'll fix your issue. What is your issue? Yes, sir. Firstly, I'm trying, sir. Please. Okay, so how to load that, I'll tell you, Salis, because the video will be, a little longer. Okay, so Sir, what I have to... सर इस मेन डॉट टीएस के जो हम रूट वैल्यू उसको ही रहने दें, जो इसमें आया उसको यहाँ से हटा के उसको कर दें तो आ जाएगा सर. ऐसे नहीं करना है ना, अभी आपको वो वाला टीएस अपलोड करना है, वो वाला कंपोनेंट अपलोड करना है. चलिए, आपने सही किया है. वहां पे मेन डॉट टीएस में आपने ऐप रूट को चेंज किया है ना. एक छोटी सी बस प्रॉब्लम की है. गो टू देयर मेन डॉट टीएस में जाइए. हाँ, यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस करने आपने नहीं किया है. आर यू एबल टू रिकॉल दैट? मेन डॉट टीएस में जाइए. गो टू मेन डॉट टीएस. यहाँ क्या करना है? ऊपर गो अप. यहाँ पे आपका मॉड्यूल बना है जो आपने बनाया है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाला. अभी आपने जो कंपोनेंट बनाया है, कंपोनेंट यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ सर. index.html में जाइए. index.html में ये आपने कुछ और फिर ओपन कर दिया है. ऐप कंपोनेंट, स्टूडेंट डिटेल्स कंपोनेंट में जाइए.
नहीं आप गलत चेक कर रहे हैं. Can you give me control to me? सर ये What I want that you children have to list load this. Now let me ask control. How I can ask the control? I don't think I can take control here. I don't know. Do one thing. Double click this here. Oh my God! Everyone has joined. I'm really very happy, but I am sorry also. It's late. Silas, can you give control to me? ओके सर. Is there any option to give control? सर ये किस Okay, no issue. No issue. Other keep trying. Just click on here. App. Just go to left side. File Explorer. I mean, where folder structure we can see. Click there. Click there. Double at the. No, not here. Don't सर यहाँ execute it. No, remove. Why you are showing this browser page? Show me your code now. Go to index.html. Open index.html. Index.html. Double click. Right. So here what you are calling app student details you are calling, correct? But it's not Yes. loading, correct? Just go main.ts. Okay. So your app module is there, and now go to app.module.ts. App.module.ts. Okay. So what you have to do is your student. Are you able to see your student details component line number 7? Yes. Can you please copy that हाँ whatever सर. there inside in your import? Can you please copy that? Only that much. Okay. Come down. Come down. Come down. Come down. Can you please bootstrap that? Line number 20. Can you please line number 20? Line number 20. Line number 20. Line number 20. Celeste. Left side you cannot read line number. Celeste line number सर लिखा हुआ है स्टूडेंट left इन्फो side. कंपोनेंट. Line number 2020. ओह सर. Bootstrap this. Yes. Bootstrap this. Replace that app component with whatever you have copied. Yes. सर इसके अंदर Paste it. ऐप को. Control V. Oh my God. Control Z. No problem. Control Z. Don't get nervous. Control Z. Control Z. Control और Z. Control Z प्रेस करते रहो. ओके. दोबारा पेस्ट करो. आप ठीक से कॉपी करो स्टूडेंट डिटेल्स कंपोनेंट को, या फिर टाइप कर दो अगर कॉपी नहीं कर पा रहे तो. स्टूडेंट डिटेल्स क्या यार, केवल वो कॉपी करना है, पूरी लाइन नहीं कॉपी करनी है, केवल स्टूडेंट डिटेल्स कंपोनेंट कॉपी करना है. टाइप करो वहां पे लाइन नंबर 20 पे. टाइप करो, तुमसे कॉपी भी नहीं होगा. टाइप करो. वेब कंपोनेंट हटा दो स्टूडेंट, वो अपने आप आ जाएगा. ओके सर. भाई तुम पहले वर्ड की टाइपिंग सीखो, फिर कोडिंग सीखना. स्टूडेंट डिटेल्स कंपोनेंट. इन्फो नहीं बाबू, स्टूडेंट डिटेल्स बनाए हो ना, या इन्फो बनाए हो? क्या बनाए हो? डिटेल्स बनाए हो ना, डिटेल्स लोड करना है ना. Yes, एब्सेंस sir. माइंड रहता है.
हाँ अब समझ में नहीं आ रहा होगा, बूटस्ट्रैप में कॉपी करें या प्रोवाइडर में, बूटस्ट्रैप में। हाँ कंट्रोल एस। गो टू ब्राउजर। आ गया सर। तो स्टूडेंट डिटेल्स वर्क्स, करेक्ट, इज इट कमिंग? आने लगा ना? यस सर। तो सर क्या ये कॉन्सेप्ट है ऐसा इसमें? मैं आज का क्वेश्चन सर। No, you just listen. Later on, you can ask the question. So Okay, sir. if you have to create a new component and you have to call it, what you have to do? You have to go and change in index.html. That's the one thing. The another thing is you have to bootstrap that. Okay. Correct. Now you have to bootstrap it. Okay. Clear है ना? ये बहुत पहले बताया गया था. Whenever I have explained Yes, the folder sir. structure, whenever I have told how the bootstrap will work, why I have given that much of time, main.ts को explain किया था, index.html को explain किया था. आप लोग पुराना वीडियो नहीं देख रहे हैं और वैसे इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा. एंगुलर बहुत इजी चीज नहीं है. एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो यू आर नॉट एबल टू रियलाइज योर वैल्यू, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी मार्केट में. चीजों को थोड़ा अच्छे से समझिए. हाँ अमन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. अमन सर आई वांट टू आस्क दैट कि बूटस्ट्रैप में ये स्टूडेंट डिटेल कंपोनेंट्स का डालने के बाद हमें और जो कंपोनेंट्स की चीजें हैं जो हमने app.component.ts वाले में लोड कर रखा है सॉरी app.component.html वाले में उसको कॉल कर रखा है, वो सारी चीजें नहीं दिखाएगा, सिर्फ स्टूडेंट डिटेल की ही चीजें दिखाएगा. right, that's what I'm suggesting. Go and watch the previous video religiously. आप लोग उसको दिन में 2-3 बार सुना करिए, कान में लगा करके. सब चीजें एक्सप्लेन की गई, समझ में आएगा. अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ. मीनवाइल सब लोग अपने अपने मशीन पे एक नया कंपोनेंट बना करके रेडी रखें. हम सबके मशीन पे देखेंगे. एंड इफ एनी प्रॉब्लम आई विल रिजॉल्व, देन विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक बाइंडिंग. करेक्ट. सो जस्ट गिव मी 5 मिनट. 5 मिनट में दूसरा लिंक मैं भेज रहा हूँ. और अगेन अगर किसी को नींद आ रही हो तो वो सोने जा सकता है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगा. तो सर जो अभी शैलेश ने यहाँ करके दिखाया है, दैट वाज द असाइनमेंट दैट यू गिव मी, दैट हाँ वो असाइनमेंट है ना, क्योंकि आप लोग खुद से तो करते नहीं है. बस आप लोग अभी अभी ये आप लोग नहीं कर पाए ना, ये आप लोग को करना था. क्यों? क्योंकि पुरानी क्लासेस में एक्सप्लेन किया जा चुका है. अब इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती है. जो चीज बताया गया है वो आप लोगों से नहीं हो रहा है. अब मुझे पता था कि आप लोगों से नहीं होगा, तो मैंने जस्ट ये चेक किया है कि आप लोगों को पता है कि नहीं, कंपोनेंट बनाते कैसे हैं वो सबको पता है. दैट्स इजी वन. बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो पेज लोड होता है, उसका एक मैंने आप लोगों को क्विक रिकैप दिया है. ठीक है. अब अगला हमारा बाइंडिंग का क्लास होगा. जस्ट वेट फॉर 5 मिनट. संस्कृति, वरीशा, आप लोग हैं क्या? Yes, sir. ओके ओके प्लीज. तो सीरियसली समझिए आप लोग. ठीक है. अभी 5 मिनट में दोबारा कनेक्ट करता हूँ मैं. ठीक है, दूसरा लिंक भेजता हूँ. Okay, sir. ओके चलिए. Sir, I am done Okay, with sir. this. Sir, I am done with this bootstrap. हाँ, show me your share your screen. I want to see that. Yes, sir. Quickly share. I will, sir. I will. 1 minute, sir. चले, आपको समझ में आ गया ना अब कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर, बस यही एक चीज गलत की है. वही तो बस होता है. वही तो बस एक छोटी सी चीज रहेगी और फिर रह जाओगे. फिर 6 महीने इधर रिज्यूमे भेजोगे, उधर रिज्यूमे भेजोगे. फिर अगला साल आ जाएगा, तुम्हारे तीसरे थर्ड ईयर वाले बच्चे भी तुम्हारे साथ जॉब ढूंढेंगे. Yes, एक sir. second. चलो भैया, तुम बाद में शेयर करना, उसके पहले रेडी रखना. मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ. Okay, sir. unnecessary Okay, video sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir.